हेलो एवरीवन, वेलकम आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके टीचर की न्यू वीडियो में। प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किए थे नेशनल पार्क्स ऑफ जे&के यूटी की एमसीक्यूज़। आज हम कवर करने जा रहे हैं एमसीक्यूज़ ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ जे&के यूटी। जो दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किए हैं एमसीक्यूज़। फर्स्ट पार्ट में हमने 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के एमसीक्यूज़ कवर किए हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, थजवस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे&के? ऑप्शंस आर बारामूला, श्रीनगर, गांदरबल एंड कुपवारा। ताजवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, गांदरबल। ताजवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी is situated in district Ganderbal. Next question. Thajwas Wildlife Sanctuary was gazetted as Wildlife Sanctuary in options are 1985, 1987, 1978 and 1945. Thajwas Wildlife Sanctuary को कब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा मिला था? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 1987. Thajwas Wildlife Sanctuary was gazetted as Wildlife Sanctuary in 1987. Next question. Thajwas Wildlife Sanctuary is also known as, your options are Overa Aru Wildlife Sanctuary, Ganderbal Wildlife Sanctuary, Baltal Wildlife Sanctuary and none of these. Thajwas Wildlife Sanctuary को और किस नाम से बुलाया जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बालतल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। थजवस इज ग्लेशियर इन सोनमर्ग। थजवस जो ग्लेशियर है सोनमर्ग का, उसी के नाम की वजह से इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम बालतल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the area of Thajwas or Baltal Wildlife Sanctuary? Options are 500 square kilometer, 450 square kilometers, 203 square kilometers and 405 square kilometers. Thajwas Wildlife Sanctuary का एरिया कितना है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 203 square kilometers. Next question. Next is flora and fauna of Thajwas Wildlife Sanctuary. Flora includes Budal, Fir, Burza, Rai and Kuchel. कांथी, अरवल, कुलमंच और फाना क्या हैं थजवस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के? ग्रे लंगूर, कॉमन लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, रेड फॉक्स, ब्राउन बेयर, एशियाटिक ब्लैक बेयर, आइबेक्स एंड मस्क डेयर. Next question. Overa Aru Wildlife Sanctuary situated in which district of J&K UT? Options are Kulgam, Budgam, Srinagar and Anantnag. Overa Aru Wildlife Sanctuary किस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग. Overa Aru Wildlife Sanctuary is situated in district Anantnag of J&K UT. Next question. Which is the largest wildlife sanctuary of J&K UT? Options are Baltal Wildlife Sanctuary, Overa Aru Wildlife Sanctuary, Rajparian Wildlife Sanctuary and Lachipora Wildlife Sanctuary. J&K UT की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ओवेरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. Next question. Overa Aru Wildlife Sanctuary established in
Options are 1993, 1978, 1988 and 1981. Overa Aru Wildlife Sanctuary कब establish की गई थी? Right answer is option D, 1981. Next question. The Overa Aru Wildlife Sanctuary is the catchment area of which of the following river? Options are Sindh River, Marusudar River, Lahwal River and Lidar River. Right answer is option D, Lidar River. Overa Aru Wildlife Sanctuary is the catchment area of which of the following river? Right answer is option D, Lidar River. Next question. Which of the following wildlife sanctuary was declared as the game reserve in 1945 under the Dogra Rule? Your options are Rajparian Wildlife Sanctuary, Limber Wildlife Sanctuary, Overa Aru Wildlife Sanctuary and Lachipora Wildlife Sanctuary. कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गेम रिजर्व डिक्लेयर की गई थी 1945 में डोगरा रूल के अंडर? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ओवेरा अरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the area of Overa Aru Wildlife Sanctuary? Options are 200 square kilometers, 425 square kilometers, 303 square kilometers and 201 square kilometers. Right answer is option B, 425 square kilometers. Next question. Next question is flora and fauna of Overa Aru Wildlife Sanctuary. Flora includes blue pine, silver fir, alpine shrubs, and fauna includes Kashmiri stag, which is also known as hangul, Asiatic ibex, musk deer, Himalayan sero, Asiatic black bear. And avifauna birds includes Kashmiri flycatcher, Egyptian vulture. These are the flora, fauna, and avifauna of Overa Aru Wildlife Sanctuary. Next question. Rajparian Wildlife Sanctuary situated in which district of J&K UT? Options are Shopian, Pulwama, Srinagar and Anantnag. Rajparian Wildlife Sanctuary किस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, अनंतनाग. Rajparian Wildlife Sanctuary is situated in district Anantnag. Next question. Rajparian Wildlife Sanctuary is also known as. Options are Limber Wildlife Sanctuary, Rajvai Wildlife Sanctuary, Daksum Wildlife Sanctuary and लच्छीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. राजपारिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दूसरा नाम क्या है और दूसरे किस नाम से वो पुकारी जाती है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दक्सुम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. नेक्स्ट क्वेश्चन. राजपारियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज एस्टैब्लिश्ड इन. योर ऑप्शंस आर 1981, 1990, 1978 एंड 1988. राजपारिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब एस्टैब्लिश की गई थी? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 1981. Rajparian Wildlife Sanctuary was established in 1981. Next question. What is the area of Rajparian Wildlife Sanctuary? Your options are 20 square kilometers, 100 square kilometers, 12 square kilometers and 70 square kilometers. Right answer is option A, 20 square kilometers.
Flora and fauna of Rajparian Wildlife Sanctuary. Flora includes coniferous forest, kale, alpine, spruce, fir, birch, and deodar. Fauna includes abode of many species, um, which is black bear, hangul, musk deer, leopard, and some wild birds. Next question. Gulmarg Wildlife Sanctuary was first declared as game reserve in options are 1978, 1987, 1981, and 1972. गुलमर्ग वाइल्ड सेंचुरी फर्स्टली कब गेम रिजर्व डिक्लेयर की गई थी? राइट आंसर इज ऑप्शन सी 1981. गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज फर्स्ट डिक्लेयर्ड एज गेम रिजर्व इन 1981. Next question. Which of the following wildlife sanctuary is about 90% covered by coniferous forests? Your options are Rajparian Wildlife Sanctuary, Gulmarg Wildlife Sanctuary, Limber Wildlife Sanctuary and हिरपुरा वाइल्ड सेंचुरी. कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो 90% कवर है कॉनिफेरियस फॉरेस्ट से? राइट आंसर इज ऑप्शन बी गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी which is situated in Baramulla district of J&K UT. Next question. Gulmarg Wildlife Sanctuary was established in options are 1981, 1972, 1978 and 1987. Right answer is option D 1987. Gulmarg Wildlife Sanctuary was established in 1987. Next question. Gulmarg Wildlife Sanctuary situated in which district of J&K? Easy peasy question. Options are Srinagar, Kupwara, Baramulla and Shopian. Right answer is option C, Baramulla. Gulmarg Wildlife Sanctuary is situated in Baramulla district of J&K UT. Next question. What is the area of Gulmarg Wildlife Sanctuary? Options are 170 square kilometers, 103 square kilometers, 101 square kilometers and 180 square kilometers. Right answer is option D 180 square kilometers. Next question. Next question is flora and fauna of Gulmarg Wildlife Sanctuary. Flora consists of alpine forests of silver fir, silver birch, blue pine, and fauna includes abode of many species such as Himalayan brown bear, black bear, leopard, musk deer, Kashmir grey langur, snow leopard, and red fox. Next question. Limber Wildlife Sanctuary situated in which district of J&K UT? Options are Srinagar, Kupwara, Baramulla and Gandarbal. Limber Wildlife Sanctuary किस डिस्ट्रिक्ट में situated है? Right answer is option C, Baramulla district. Next question. Limber Wildlife Sanctuary is situated 70 kilometers from Srinagar on the north bank of river. North bank of which river? River दो बार लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है. Your options are Kishan Ganga river, Lidder river, Jhelum river and Ravi river. Right answer is option C, Jhelum river. Next question. When was Limber Wildlife Sanctuary
notified as wildlife sanctuary? Options are 1972, 1987, 1981 and 1999. Right answer is option B, 1987. Limber Wildlife Sanctuary notified as wildlife sanctuary in 1987. Next, flora and fauna of Limber Wildlife Sanctuary. Flora includes coniferous forests, deodar, silver fir, silver birch, blue pine. Fauna includes abode of many species such as markhor, black bear, snow leopard, and red fox. Avifauna includes pheasant, snowcock, and chakor. Next question. Lachipora Wildlife Sanctuary is situated in which district of J&K UT? Options are Srinagar, Ganderbal, Baramulla, and Pulwama. Lachipora Wildlife Sanctuary किस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बारामूला डिस्ट्रिक्ट. Next question. Lachipora was established as sanctuary primarily to protect which animal? Options are snow leopard, hangul, brown bear and markhor. लच्छीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एस्टेब्लिश किया गया था खास करके किस जानवर को प्रोटेक्ट करने के लिए? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मार्खोर. Next question. Lachipora Wildlife Sanctuary was established in which year? Options are 1972, 1985, 1987 and 1978. Lachipora Wildlife Sanctuary 1987 में एस्टेब्लिश की गई थी. मैक्सिमम जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं वो 1987 में एस्टेब्लिश करी गई हैं, बट कुछ 1981 में है, इस वजह से ये क्वेश्चन इंक्लूड करना पड़ा. नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्लोरा एंड fauna of Lachipora Wildlife Sanctuary. Flora includes coniferous forests, broadleaf forests, birch, chestnut, Himalayan fir, Persian walnut, and silver fir. Fauna includes markhor. Avifauna includes home to special western tragopan, which has been categorized as vulnerable species by IUCN. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये याद रखना है. लच्छीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस बर्ड से मशहूर है? उसका नाम है वेस्टर्न ट्रैगोपन, जिसकी इमेज ऑलरेडी आप देख रहे होंगे, जिसको किस कैटेगरी में रखा गया है? वल्नरेबल स्पेशी कैटेगरी में. किसने रखा है? IUCN. IUCN की फुल फॉर्म क्या है? हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ी थी. कमेंट सेक्शन में बताएं IUCN की फुल फॉर्म क्या है और इसके हेड क्वार्टर्स कहाँ हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना ज़रूरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हिरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K UT? ऑप्शंस आर श्रीनगर, किश्तवाड़, गांदरबल एंड शोपियान. हिरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, शोपियान. हिरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन शोपियान डिस्ट्रिक्ट. हिरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नॉर्थ साइड पर गुमसर लेक है और साउथ साइड पर सरनसर और ईस्ट साइड पर रूपरी, वेस्ट साइड पर पीर पंजाल पास है और नॉर्थ ईस्ट की तरफ हिरपुरा विलेज सिचुएटेड है. Next question. Hirpora Wildlife Sanctuary was established in 1990, 1978, 1987 and 1972. Hirpora Wildlife Sanctuary को कब एस्टैब्लिश किया गया था? राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 1987.
Next question. Hirpora Wildlife Sanctuary is bounded to north by which of the following lake? Options are Mercer Lake, Gumsar Lake, Satsar Lake, and none of these. Right answer is option B, गुमसर लेक, जो कि आपने अभी इमेज में देखा था। गुमसर लेक जो सिचुएटेड है नॉर्थ साइड पर हिरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ हिरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज, options are 341 square kilometers, 690 square kilometers, 150 square kilometers and 150 स्क्वायर किलोमीटर्स। हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का कितना एरिया है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 341 स्क्वायर किलोमीटर्स इज द एरिया ऑफ हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। Flora and fauna of Hirpora Wildlife Sanctuary. Flora includes coniferous forests, deciduous subalpine forests dominated by kale pine, spruce, birch, and wild rose. And fauna includes Himalayan black bear, Himalayan brown bear, musk deer, leopard, Tibetan wolf, critically Pir Panjal markhor. And fauna includes 120 species of birds found here. 120 किस स्पेशीज़ हैं बर्ड्स की जो कि हीरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाई जाती हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड पार्ट नंबर 2 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।